All right, super good evening, everyone. The recording is on and we are starting the session now. I hope you all know. Can you confirm me if you all can see my screen well? All right, can you see all my screen well? Yes, thank you very much, everyone. Ankit, Thakur, all right, Ashutosh, confirmation, brilliant. All right. So now let's focus on a few aspects of the theory side of advanced AI and ChatGPT and prompt engineering, and then we are going to do some hands-on. So I'll show you both aspects today, and then whatever the questions are there, we're going to take those questions at then. So we will start with the focusing on understanding a little bit in depth about ChatGPT, how it is a chatbot, and what are the intelligence behind this robotic process. Okay, so there are two parts. One is, like, say, it is called human workforce. Like all we human, we are called human workforce. In similar way, the bot that is working for us, it is called digital bots. Okay, you can say robots, digital bots, both are the same thing. It's the same meaning there. So you can say robot or bots or digital bots. Okay, so chat bot is basically a robot for chatting, digital bots for chatting, and that is how the chat GPT has evolved further and further. So you, in a nutshell, you can simply say chat GPT is a AI powered chatbot. That is how robot is chatting and communicating with human on an NLP, natural language processing. So जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, this is called natural language, NLP, natural language processing, and machine understand machine learning only. So machine language means binary. You know, right? 0 and 1 are binary. So this is called machine language. And the way we are talking, it is a free text. So that is called NLP, natural language processing. So bot is now matured enough to take natural language and process this thing, but internally it feed the data as a machine learning. So that is how this chatbot communicate with human using that natural language processing. All right. All right. Perfect. Thank you so much. Now, let me understand and let's understand what is GPT in a nutshell. See, GPT is a very, very vast topic. It's an entirely prompt engineering altogether, and it is like a 2 years program. But what I'm trying to give you, in a simplistic term, what this is all about and how you can use and correlate this thing in your normal day-to-day life. Okay, so GPT is a GPT. It is a combined of the things where we can talk about, like, say, LLM models, large language model, that is generative pre-trained bots. That is what we call it, the GPT, and it is a part of LLM, and ChatGPT is just one of the LLM. If you compare this thing with others, so say for example, you can say Google Bard is another LLM. Microsoft Bing is another LLM. Similarly, Salesforce Einstein is another LLM. So there are a lot of large language model, and ChatGPT is just one of the examples. Since there is a lot of marketing has been done for ChatGPT, so that is why you are seeing ChatGPT quite a lot. But others are also there, like Google Bard or say Microsoft Bing or say Salesforce Einstein and all. So multiple GPTs are there. So let's see how it works. Okay, I hope you can see my screen well, right? Just give me a confirmation you all can see my screen well. So this works in a way that when scientists started modeling the human brain, so they understanding the internal construct of the brain, and they wanted to mimic this thing in an artificial way. So this is the digital model of human brain. Here you can say this is the structure, and all the yellow dots that you are seeing, it is called neurons. Okay, neurons with the fibers connected with each other so that the information transfer from one point to another point. And that is how, in nutshell, the input that comes into the neurons, mind takes a call and gives the output, the result out there. So scientists for a long time, they're trying to mimic this thing in a digital form. So this is the conceptual part of the human brain, where all the yellow dots you can see, this is all the neurons. And here the idea is coming, like the input comes in, and then the neurons, the network you can see, it is the data that transmits from one neurons to another neurons to take the decision. Abhi scientists ne kya kiya hai? They have modeled this thing and built this thing in the form of GPT or large language model. तो उसने क्या किया? Now they have mimicked this thing. It is called ANN, artificial neural network. तो उसने पूरा का पूरा इसको ट्रांजिशन करके दिखाया ANN पे कि how we can fit the data in our brain, and that way we are able to take the decision output there. तो
So here you can say this is all the neurons is connected with each other. So the first layer, it is called input layer. जैसे like ChatGPT हम लोग कुछ input देते हैं, it process the data and then we get the output. So this way you can see this all are the pointers that are the neurons where the data fits in. Then it goes to the different layer of screening the data, मतलब उसको filter करते हैं. And finally with the filter, the final comes that is the output. तो ये आप देख रहे हो, the first layer is the input. Within that there are n number of layers जो process करता है information को, and finally it gets the output. Based on this we take a decision, right? So this is how the model works, and this is based on this all the LLMs, large language models like say ChatGPT, Google Bard and all, they all are evolved. अभी आप कर सुनते होंगे कि इसमें 1.5 billions neurons है या billions data points है. This all yellow dots are called that parameters. So that is how it works. It's very complex, but I've been trying to mimic this in a simple way so that you can understand that once input is provided to ChatGPT or LLM, how the output comes out. So based on this, we get the output or prediction, and then the output comes in the form of the text or the response. Okay, so this is based on this theory that is called ANN, Artificial Neural Network. Okay, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाकर के एक सिंपल से आप समझ लो कि दिस इज हाउ द LLM मॉडल ChatGPT and all works. All right. Good evening, sir. Just now. All right. Perfect. No, okay. It is all recorded also. Are you all clear that देखो अभी human model से see that is why this is called artificial intelligence, right? इसने क्या किया है कि जो ह्यूमन ब्रेन का जो पावर है इसको आर्टिफिशियली ट्रांजिशन कर दिया है इन ए डिजिटल फॉर्म. So this is how this may be. Are you all clear on this? I am trying my level best to make this thing highly simple so that anyone with a simple understanding also can take this thing ahead. Are you all clear on this? Just mention as is super clear. Thank you, Jyoti. Thank you, Hina. Thank you, Rakesh. Thank you, Abhinay. All right. Perfect. तो बस इतना ही समझना, नहीं तो ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है. इसके लिए आपको न्यूरल और न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल बहुत कुछ समझना पड़ेगा. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द जस्ट दैट आपको अंडरस्टैंड भी होना चाहिए कि ChatGPT का इंटरनल एल्गोरिथम क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ इट टेक्स द डिसीजन, हाउ द आउटपुट कम्स आउट, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. It is based on ANN, Artificial Neural Network. All right. Now let's understand what is prompt engineering, and then we'll take the examples of prompt engineering and we'll do the hands-on. So prompt engineering, as you understand, it is the process of designing and refining the input. अभी जो हम लोग न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया ना, ये जो फर्स्ट लेयर है, दिस इज योर इनपुट लेयर. ओके, और यही चीज है ह्यूमन ब्रेन के साथ. दिस इज हाउ दिस इज द डिजिटल मॉडल ऑफ ह्यूमन brain has been done into this format that is called ANN, and यहाँ से prompt engineering has evolved. So here it is called the process of designing and refining the input. जो input हम देते हैं ना, उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, उसको रिफाइन कैसे करते हैं, that goes into LLM, large language model, to get the response. Okay, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो. This all are your input. तो फर्स्ट इनपुट देते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, so that we get the better and better output there. So this is what the prompt engineering is all about, and this is how it is connected to artificial neural network. All right. So the process of designing and refining the input into the large language model in LLM or say ChatGPT, so that we get the desired output. मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका बेस्ट रिस्पांस कैसे मिलना चाहिए. तो ये बेस्ट रिस्पांस मिलने के लिए वी हैव टू डिजाइन द इनपुट. ओके, द बेस्ट इनपुट वी गिव, वी गेट द बेस्ट आउटपुट. दैट इज व्हाई वी कॉल इट QIQO, quality in and quality out. Okay, the more quality input you provide, you will get the better quality output. नहीं तो it is always GIGO, garbage in and garbage out. Garbage अगर दोगे तो garbage मिलेगा. All right, everyone just mention QIQO. That is your formula. That is the mantra. जब भी आप ChatGPT या prompt के बारे में समझते हो ना, तो आपको QIQO formula follow करना है. Everyone just write QIQO, quality in and quality out. Brilliant. राइट मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल हम लोग हैंड्स ऑन करके देखेंगे कि कैसे करते हैं और क्या है बैड प्रॉम्प्ट, क्या है गुड प्रॉम्प्ट, क्या है. वी विल टॉक अबाउट दिस. ऑलराइट, सो नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप अपना कैरियर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स में बनाना चाहते हैं, सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी न्यू फील्ड एंड इट इज वेरी मच इन डिमांड. जस्ट लाइक आपने मालूम होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस इंजीनियर, और से केमिकल इंजीनियर, oil and gas engineer, petroleum engineer, or say civil engineer, multiple engineers are there. Similar way, now the new trend because of AI is called prompt engineering. So there are 4-5 things that you need to understand if you want to build your career
into prompt engineering, and it is highly in demand. इसमें बहुत ही massive hike है, lot of demands है, but it needs certain input criteria. आपका एजुकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, ओके, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम से डेटा साइंस और से कंप्यूटर साइंस और कॉग्निटिव बैकग्राउंड, दैट इज वेरी गुड. आपको इसमें लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाइथन और जावा, इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस मॉडल्स. Then you need to understand more into AI, artificial intelligence, NLP, and natural language units, NLU and all. मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड ऑल. Then algorithm, say deep learning and all, that is important, and few of the frameworks. So these are the minimum requirements for you to build your career as a prompt engineers. All right, so just digest this part, that like if you are like moving ahead in your career and want to get into prompt engineering, this is what is important. Now let's understand what is the different type of prompt. Okay, the prompt is basically there are two types of prompt. Okay, so one is called discrete prompt and second is a continuous prompt. All right, so discrete का मतलब है specific and continuous का मतलब है तो चलता हुआ, राइट. तो जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइस एक्शन देखते हैं ना, तो हमेशा कंटिन्यूअस मूव होता रहता है, तो दैट इज अ कंटिन्यूअस पार्ट. और डिस्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक नंबर, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क व्हाट इज योर एज, यू गिव मी ए स्पेसिफिक नंबर, राइट, से 24 years, 42 years, 36 years, so that is a discrete one, specific number. But continuous का मतलब होता है that keeps changing and all. तो prompts are of two part, one is called discrete and second is continuous. जो हम लोग चैट बॉट के साथ काम करते हैं, जो चैट करते हैं, that is called continuous, and you can understand that why it is continuous, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, we get the response, then फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पॉन्स आता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, that is called continuous. डिस्क्रीट का एग्जांपल ये होता है कि अगर आप उसको बोलते हो कि पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए, तो ये इट विल गिव यू अ कंप्लीट प्रोग्राम, ओके, तो दैट इज वेरी डिस्क्रीट. अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन बना करके दो, इट विल गिव यू एग्जैक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट. तो वेरी द आउटपुट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. और कंटिन्यूअस में ये होता है कि आप उसको मॉडिफाई करते जाते हो, उससे और क्वेश्चन पूछते जाते हो, जैसे हम लोग बात करते हैं, देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. So that is the fundamental difference between discrete and continuous prompt. And mostly we are going to use the continuous prompt because like जो हम लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं उसको सुपर प्रॉम्प्ट में डालते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रॉम्प्ट यूज करते हैं. लेकिन जब आप अगर प्रॉम्प्ट का एपीआई यूज करते हो, बिजनेस एपीआई यूज करते हो, दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द डिस्क्रीट प्रॉम्प्ट. तो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस. ओके, now here can say this is the example that we just talked about. One other example is close prompt and prefix prompt. ये आपको important है समझने के लिए. So close prompts and prefix prompt are those, जैसे हम लोग fill in the gaps करते थे पढ़ाई करते के समय, राइट, कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछ दिया और उसमें एक fill in the gaps दे दिया, राइट, तो that is called close prompts. तो आपका जो रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से मिलेगा वो fill in the gaps होगा, ओके. और prefix का मतलब है आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसका रिस्पॉन्स क्या है, that will come as a prefix. So let's understand by example. So say for example, close में हम पे पूछ रहा हूँ, similar to how chat Google democratized. Okay, तो Google क्या कर दिया है, it's a democratized information. Okay, क्योंकि इंफॉर्मेशन नाउ अवेलेबल टू एवरीवन. पहले क्या होता था, अगर आप एमआईटी में जाते हो, आईआईटी में जाते हो या टॉप इंस्टीट्यूट में जाते हो, देन ओनली यू गेट दैट टाइप ऑफ नॉलेज, स्किल नॉलेज. बट नाउ गूगल हैज democratized everything so that the knowledge is available to everyone. So that is how it is called. It is democratize the knowledge, okay, or information. So large language model have democratized the intelligence. तो ये जो fill in the gaps है, ये जो information, that is called close prompt. And जब आप ये question पूछते हो with the dot line, you will get the information here. So this is called close prompt because you get the specific response from ChatGPT or LLM. All right. Now, if you just change this thing and you say, similar to how Google democratized the information, large language model have democratized what? तो अगर आप इस तरह का उसको चेंज कर देते हो, that becomes a prefix. Means you are asking a question and getting the response. तो इसके केस में मिल जाएगा like intelligence. It has LLM has democratized the intelligence, where Google has done this thing for information. So that is the fundamental difference between these two. So your key takeaway is two things. Here you can need to understand what is prompt engineering. Okay, prompt engineering क्या है, prompt को हम लोग कैसे develop करते हैं, input क्या है, output क्या है. Then what are the requirements in order to be your successful prompt engineer career के लिए. And the third one is difference between discrete prompt and continuous prompt. And
close prompt and prefix prompt. Okay, so these are the fundamental things that you need to digest and you need to have. ये PPT मैं upload कर दूंगा, आप इसको फिर से revise कर लेना, so that at least fundamental you are sound that what prompt engineering is all about, what is GPT and how it is related to human brain and how ANN works. All right. Okay. And now one other thing, as someone has asked about the examples, here you can say the example of bad prompt and good prompt. As we have written here, right? Quality in and quality output. अगर आपको quality question पूछते हो, मतलब जो prompt quality prompt पूछते हो, you will get the quality response. If you ask silly question, you will get stupid response. Okay. Here in this example, अगर मैं बोलता हूँ write a marketing plan for an application. Suppose मुझे एक mobile application develop करना है, and I'm simply saying write a marketing plan and app. This is the bad example. This is a bad prompt because it does not give any information. Now, if I have to take the same example with the right prompt, here you can say this is the right prompt. ये पूरा का पूरा strategy बना हुआ prompt का. This is how prompt has to be created, and that is why prompt engineers are so much in demand, and that is why they are commanding such a massive hike in their salary. Here you can say what is the role. तो इसका एक framework होता है, that is called RCG framework. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो what is the role, what is the context, and what is the prompt. तो रोल क्या है, तो अगर मैं बताता हूँ कि से यू आर ए डिजिटल मार्केटर स्ट्रेटजी, ओके, एट ए टेक स्टार्टअप, ओके. नाउ कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे एक कंपनी ओपन करना है, उसका नाम मैंने दिया टास्क मास्टर, ये एप्लीकेशन मुझे चाहिए, ऐप बनाना है मुझे, मोबाइल एप्लीकेशन. देन आई एम गिविंग द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ये मोबाइल में जो एप्लीकेशन बनेगा उसका क्या क्या फीचर है. तो जब आप इतने डिटेल में जाओगे, देन यू आर क्रिएटिंग अ राइट प्रॉम्प्ट. तो दैट इज कॉल्ड गुड प्रॉम्प्ट. और अगर आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, दैट इज कॉल्ड राइट प्रॉम्प्ट, राइट. आई होप यू आर क्लियर नाउ. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, व्हाट इज बैड प्रॉम्प्ट, व्हाट इज गुड प्रॉम्प्ट, and how it is related to human brain, human psychology, and then how we are connecting this thing with ANN, right? बस इतना ही थ्योरी मुझे आज बताना था आपको. आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? ऑल क्लियर. अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से आप देख लेना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्योंकि सब लोग सिर्फ चैट जीपीटी बताते हैं, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को कोई नहीं बताता, राइट. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हैव दिस थिंग. ऑलराइट. तो अंडरस्टैंड शुभ्रांशु, अगर आपको पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज इट्स मोर ऑन द न्यूरल नेटवर्क साइड. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय रिविजिटिंग दिस थिंग वंस अगेन. ऑलराइट. आई कैन सी मोस्ट ऑफ हिमा इज सेइंग यस, सुपर क्लियर. ज्योति इज सुपर क्लियर. अंजू इज सुपर क्लियर. All right, KL Thakur is clear. All right, Pradeep is clear. All right, all right. All clear. Sultan is super clear. Just give me super clear if you are clear. All right. थोड़ा सा बाउंसर है. Yes, I can take your thing. थोड़ा सा बाउंसर इसलिए होगा क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और कुछ चीज को दिमाग में प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. All right. Brilliant. Super clear. Super clear. All right. All right. Brilliant. Maximum I can see like almost 90% of you are saying super clear, sir. रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. यस प्रदीप, इस ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो मॉर्निंग में बाय 10 o'clock यू विल गेट द रिकॉर्डिंग आल्सो. यस. ओके, राजा इज वेरी गुड क्वेश्चन. हाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म टू क्रिएट अ सुपर प्रॉम्प्ट. वो बताऊंगा मैं आरसीजी फ्रेमवर्क में कि हाउ वी कैन क्रिएट द सुपर प्रॉम्प्ट यूजिंग 9 स्टेप प्रोसेस. ओके. ऑलराइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच. तो ऑलराइट, श्योर. Yes, go ahead, Murali. All right, perfect. Yes, yes, yes. All clear. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो. इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, and how you will be able to use this there. All right, all right. मुरली का क्वेश्चन है, what is the difference between AI and BI? Okay. What is the difference between AI and BI? बहुत good question. Okay. Anyone want to give the answer? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत जगह एप्लीकेबल होता है एआई एंड बीआई. तो आई डोंट ट्राई टू गिव द आंसर. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एआई एंड बीआई? ऑलराइट. Sunana is saying that which AI tool we can use. All right, okay, artificial intelligence and business intelligence. Very good, Priya. Priya ने बोला है it is AI and business intelligence. That is right. Yes, Shubhranshu is right. All right, very good. I can get a lot of response. Excellent. So your question, Murali, what is the difference between AI and BI? Most of our participants are saying it is the difference. It is
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मशीन that has all the required data, okay, based on which it can take a decision without human intervention. इसको human intervention की जरूरत नहीं है। जो मैं एग्जांपल लेता हूं, से फॉर एग्जांपल दैट यू हैव ए ड्राइवरलेस कार जिसमें ड्राइवर नहीं है एंड द कार कैन रन, ओके, कैन गो फास्ट, स्लो एंड ऑल बेस्ड ऑन द डेटा इट हैज। सो दैट इज बेस्ड ऑन द एआई। जो नेटफ्लिक्स पे आप देखते हो मूवी या जो वेब सीरीज देखते हो, उसका जो रिकमेंडेशन आपको आता है कि इट इज मैचिंग 88% और 85%, दिस ऑल बेस्ड ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका फेस रिकॉग्नाइज कर करके फेसबुक आपको टैग कर देता है आपके फ्रेंड लिस्ट में, दैट इज ऑन एआई। आप किसी कंपनी में जब इन करते हो तो नाउ दे आर डूइंग द बायोमेट्रिक, जो आपके आई के रेटिना को स्कैन करके जो आपको चेक करता है, बताता है कि दिस इज मिस्टर राकेश और दिस इज मोहन। तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द एआई। ऑलराइट, बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ प्लेटफॉर्म that is to create the reports, dashboard, and understand the inside of the business. Okay, so that is what the BI is all about. Where the most powerful thing is Microsoft BI, that is called Power BI, that you can use for this. All right, perfect. Are you all clear on this? Right. Okay. गिरीश, दिस ऑल आर एलएलएम्स। ओके, तो ये अलग अलग कंपनी ने बनाया है। जैसा कि आप देखते हो ना कि जब आप ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हो तो आपको पार्क एवेन्यू का भी मिलता है, देन आपको मिल जाता है अरविंद मिल्स का। तो अलग अलग ब्रांड का है ना, तो ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपनी ने बनाया हुआ है एलएलएम मॉडल। तो एक गूगल ने जो बनाया उसको गूगल बार्ड बोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया उसको माइक्रोसॉफ्ट बिंज बोलते हैं, ओपन एआई ने जो बनाया है उसको चैट जीपीटी बोलते हैं। ओके, तो दीज आर द फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर्स व्हाट दे आर गेटिंग इन। ऑलराइट, ऑलराइट। They okay, BI is there for a long time, Jagdish. BI is separate entity. Okay, there is just some interface between AI and BI, but both are separate entity. BI stands for business intelligence. Okay, based on the data analysis, how you can get insight of the business. मतलब कि आपका revenue forecast कैसा हो सकता है, कि आप जैसे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का रेवेन्यू नेक्स्ट क्वार्टर क्या हो सकता है, जो इंटेलिजेंस आता है दैट इज बेस्ड ऑन द बीआई। तो इट्स अ प्रोजेक्शन। ऑलराइट, यस। All right, perfect. So let me move ahead now, and I want now you to do the some practice part of this. All right. कल हमारा Q&A सेशन है, तो tomorrow we will be having dedicated question answer session. तो जितने भी आपके questions आ रहे हैं, we will be taking those questions tomorrow session there, right? That is tomorrow our weekly Q&A session. All right. Now let's move ahead and understand using this prompt what we can do and how we can do these things then, right? तो मैं थोड़ा practical बताना चाहता हूँ so that you can do the practice part of this. All right. Just give me a thumbs up if you're all clear on this. All right. Okay. Brilliant. Thank you very much. Okay. From all this NLP and all, ChatGPT. Okay. Why ChatGPT? Okay. तो अब ये आप ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, आई कैन सी व्हाई ChatGPT इज बेटर देन अदर एलएलएम। फारूक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो फारूक आप ये समझ लो कि नासा है और एक इसरो है, ऑलराइट, एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक से अपोलो है रशिया के साइड। सो अलग अलग ये स्पेस एजेंसी है। तो कौन सा एजेंसी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, जिसके पास ब्रिलियंट इंजीनियर्स हो, जिनके पास फंडिंग ज्यादा हो, राइट, वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। एंड यू नो नासा इज मच अहेड ऑफ अस बिकॉज उनके पास शुरू से ही काफी पैसा रहा है एंड दे हैव द ह्यूमन कैपिटल विद देम, राइट। नाउ वी आर ग्रैबिंग इट क्योंकि हम उसमें ज्यादा फंड कर रहे हैं। तो अगर हम मैं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी या एवरीवन सेज दैट चैट जीपीटी इज बेटर देन अदर एलएलएम, इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस बिल्ड करने में जाता है चैट जीपीटी को, दैट इज ह्यूमंगस। देयर इज ए ह्यूज फाइनेंशियल बैकिंग इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस थिंग। अभी देखो चैट जीपीटी जो शुरू हुआ था ना, वो 1.0 से शुरू हुआ था। द फ्री वन दैट राइट नाउ वी आर यूजिंग दैट इज 3.5। उसके बाद 4 आया, 4 प्लस, राइट, दैट इज द पेड वर्जन, एंड राइट नाउ 5 इज कमिंग। 5 हैज text, video, audio, and multiple things there. So the way it is evolving, it is because of the funding and the people who are working into this. The more quality investment it is there, the product would be better. तो आप समझ सकते हो कि how it is compared to others. All right, all right. Is this answered your question, Farooq? All right, can answer it. क्या है question, Saranjit? I didn't see. Actually, it is flooded with all the response. Just keep your questions there.
क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ, फर्स्ट लेट कंप्लीट दिस थिंग एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चन एट द एंड. ऑलराइट, जस्ट गिव मी थम्स अप इफ इट्स ऑल ओके विथ यू. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस थिंग देयर. ओके, तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने वाला हूं कि जो आपके प्रैक्टिकल प्रोफेशन में काम आने वाला है. ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग एज ए प्रैक्टिस ऑफ दिस. सो दिस ऑल वुड बी अवेलेबल इन योर एलएम. ओके, आपके एलएमएस में ये सारा मिल जाएगा. एंड वी आर गोइंग टू डू सम हैंड्स ऑन एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ assignment for you to complete this thing. So we are now using a prompt and the super prompts, how to create emails, messages, improve the LinkedIn, how we can create the presentation, and how even we can create VBA, Visual Basic Script, or Excel formulas using prompts. All right. So these are the fundamental things that you need to understand using prompt. So I will take some example and then you need to take this thing there. All right. Yes. So please hold on your questions. Thank you very much. We had dedicated Q&A, so we'll answer all the questions. All right. So now let's understand what is this. So for example, see, this all are for you. It is available in your LMS. So I'll take some examples and you start using this thing on a regular basis. The more you use, you will be better in terms of your prompting job. Okay. And the more you're comfortable with prompt, your job, your productivity will boost like anything. So here you can say, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को प्रोफेशनल ईमेल लिखना रहता है, राइट, तो राइट द प्रोफेशनल ईमेल्स. हियर कैन से चैट जीपीटी कैन हेल्प यू टू राइट द प्रोफेशनल ईमेल्स एंड हैव द एप्रोप्रिएट बिजनेस कम्युनिकेशन. मैंने बहुत लोग को फायर होते हुए देखा है. ट्रस्ट मी, मेनी पीपल गॉट फायर्ड बिकॉज दे हैव misspelled many things in their business communication. वो कंपनी का सीएक्सओ को मेल भेज दिया था with some lousy language and they got fired. So you need to be very careful while if you are working professional, you need to be very careful about the language you can use. So you can write the professional email using ChatGPT, brilliant professional email using this. Here you can say for example, this is the prompt it is given. So you can say for the business communication, it's very, very important that you have the right command on the vocabulary, the words, the grammar, and there should not be any misspelling or spelling mistakes. So control C. Here you can say, I need to send an email to my team outlining the agenda of our weekly meeting. Can you help me to write a professional email that clearly conveys the information and demonstrate my professionalism? Right? आप इसको किसी भी चीज में बना सकते हो. Suppose you are sending the email to your customer, okay, to get a concurrence on the project that you have done. You have submitted your RFP, request for proposal. You want to get a professional sign off onto this. You have already submitted one invoice. You want a concurrence on this, that invoice has been processed. Right? तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. Like for example, that you want to, like you have got some offer from a top company with a top position and you want to give a very professional response and all. तो इसको आप थोड़ा सा भी चेंज कर करके you can use this there. So like say for example, this is my prompt, copy it. Okay. Now go back to your chat GPT and here you can simply go and paste this here. Okay. Here you can say, I need to send an email to my team outlining the agenda, okay, for weekly meeting and all. So now can you tell me how many of you are using this type of thing where you are creating your meeting agenda, sending the summary of your meeting notes to your team, to your boss, to your customer and all? How many of you are doing this thing on a regular basis? Me? All right. So Ransu is saying me. All right. How many of you are doing this thing? Rakesh is saying me. Kamlesh, yes, me. Vinay is saying me. All right. So this is going to help you a lot to create your entire agenda. Okay, आपको फिर से notes लिखने का करने का जरूरत नहीं है. Let's use this thing and send this and just say boom. Here you can say this is there. Now here can say इसने क्या किया है, आपका पूरा का पूरा remarks, opening agenda सब कुछ आपको बना करके दे दिया. Can you see here? This is the way it is structured. Such a professional way. It is saying that see, this is your MOM, minutes of meeting, right? आप लोग बहुत बार लिखते हैं, हम लोग बहुत बार लिखते हैं minutes of meeting. Here you can say this is the agenda for the date. आप date change कर दो. Opening remarks, what are the introduction, who are the attendees and all. Once you keep this thing, reviews of your previous meeting क्या था, what are the updates, okay, and who are the people who have reported this thing. तो ये पूरा का पूरा structure आपको ready है, and what is the plan of action and all. So if you are sending this type of email, can you tell me how good professionally you look to your management? Will that make your life super easy? Yes, Santosh, that's right. How many of you finding this thing that you can use on a regular basis? जो आप करते हैं ना, उसको थोड़ा सा हटके करो. See,
जो हम लोग करते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा 1% डिफरेंट करोगे ना, यू विल बी इन द टॉप 1%. दैट इज व्हाट, सी सब लोग कॉमन काम करते हैं, थोड़ा सा आप डिफरेंट काम करोगे ना, आप एक अलग, अपना एक अलग इमेज बना लोगे ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी आप करते हो, इवन कस्टमर के साथ भी, या अपने टीम के साथ भी, या इवन अपने फैमिली के साथ भी. तो इफ यू स्टार्ट राइटिंग दिस टाइप ऑफ MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इट विल चेंज द पर्सपेक्टिव and it will change how people are seeing you as a professional. Do you agree? Yes, ज्योति, this all will be available to you in your LMS. मैं कहाँ दिखा दूंगा कि कहाँ पे है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा. How many of you agree with this? All right. तो ये आप मिनट ऑफ मीटिंग बना सकते हो इससे, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम का एजेंडा बना सकते हो. अगर से आप एडवांस में कोई मीटिंग सेट कर रहे हो, उसको आपको क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है, सो दैट पीपल आर रेडी विद देयर डेटा पॉइंट्स. अब ऐसा ना हो कि मीटिंग में आपने बुला लिया, अब किसी को मालूम नहीं कि डिस्कस क्या करना है. तो यू कैन यूज दिस वन एंड सेंड अक्रॉस. ऑल राइट. Agree? Always superb. Brilliant. Brilliant. All right. So this is how you need to work. So now you can see I have a complete list of all. Okay. So I'll just show you a couple of them. Here you can say, for example, edit and proofread. Say many of you, most of us, right? कुछ ना कुछ मिस्टेक करते रहते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही खराब माना जाता है कि primarily if you are sending to your foreign customers and all. अगर आप like आप MNC में काम कर रहे हो, तो वहां पे अगर कुछ भी गलत हो जाता है या मिस स्पेलिंग हो जाता है, और इफ इट इज नॉट मेकिंग राइट सेंस ग्रामेटिकली, it looks very awkward, okay, and straightforward, that gives you very very lazy pictures. आपका very lousy picture बन जाता है. In order to avoid this thing, you can use your edit and preferred emails. Here you can say simply, I need to send, यहाँ पे आप देखो क्या करना है आपको. Here it is saying, I need to send an email to my client apologizing for a delay and want to make sure it's error free and easy to understand. बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं डेडलाइन को मीट नहीं कर पाया, या जो मैंने प्रॉमिस किया था वो टाइम पे नहीं हो पाया, तो you need to forward your apologies for this, right? तो इसको प्रोफेशनली कैसा करना है, so that it is polished, it is professional, and you are getting the trust and confidence back from your customer. So let's use this one. नहीं तो बहुत बार होता है ना कि आप कंपनी में, आप ऑर्गेनाइजेशन में, या अपने कस्टमर को या अपने टीचर को, प्रोफेसर को कुछ कमिटमेंट कर दिया, बट समहाउ बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन और बिकॉज ऑफ मेडिकल सिचुएशन ऑल, इट डज नॉट हैपन. तो लेट्स वर्क इट आउट इन अ प्रोफेशनल वे. तो इसको आप लेकर के कंप्लीट कॉपी दिस एंटायर थिंग, go back to your chat GPT and simply just send out this message. I need to send an email to a client apologizing for a delay and want to make sure that it's error-free and easy to understand. Can you help me to edit and proofread my email to ensure it's polished and professional? अभी आपको क्या करना है, आपने एक ईमेल बना लिया, आप उसको पॉलिश करना है. ओके, तो आप इसको यूज करके उसको पॉलिश बना सकते हो, एरर फ्री बना सकते हो, एंड सेंड द ईमेल. यू कैन से, of course, I would be happy to help you a draft a polished and professional email. Apologizing for that. Please provide the text. तो जो आप टेक्स्ट बना रहे हो, तो जो आप ईमेल भेजना चाह रहे हो, उसका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपको ये बहुत ही प्रोफेशनल ईमेल बना करके दे देगा. All right? Will that make your life easy? All right. Yes. Super easy. तो आपको करना क्या है, जो आपने ईमेल बनाया ना, उसको इम्प्रूव कर रहा है ये नया ईमेल नहीं बना रहा है. ये जो आप बना रहे हो ना, इसको मोर प्रोफेशनल, मोर पॉलिश्ड, ओके, एंड मोर इंट्यूटिव बना रहा है. सोनिया, दिस इज चैट जीपीटी ओनली. वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन चैट जीपीटी. सुपर इजी एंड इंप्रेसिव इन इज सेइंग. दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू डू. जब आप इसका यूज सही से करना सीख लोगे ना, आपका लाइफ इतना इजी और इतना प्रोफेशनल हो जाएगा. पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू इन अ वेरी डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर. ऑल राइट. Okay. Now, there are a lot of examples that I have created for you. Okay. So here you can say, for example, that many time you need to send same email. Okay. Very similar type of email. Just say every week you have weekly meeting, or say business review meeting in a month, or you have quarterly review meeting, or you have weekly status reporting meeting and all. All right. तो आपको क्या करना है कि इसका email का template आप बना लो, और उसको बार बार वही यूज करो, so that it is unified, it is well structured, and do this thing. तो आप इसके लिए सिर्फ ये यूज कर लो. This prompt will give you a standard template that you can use for the same thing again and again. तो I want to streamline my communication. उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, that all you can do using the template. All right. So there are a lot of things that is there. So I have created like say almost 10 different emails for you.
That mostly covers everything what you are going to do on email front. All right. तो आपको क्या क्या, मैंने 4-5 एग्जांपल आपको बता दिया है. आपको करना क्या है, इसका सबको यूज करके अपने कॉन्टेक्स्ट में you need to create your prompt, you need to create your template, and you need to send out the emails and all. All right. Will that make you super helpful? Yes. Yes, yes. So Pradeep, this all I am going to share with you in your LMS. Very powerful. All right. Are you all clear on this? तो आपका ईमेल का जो भी प्रॉब्लम है, थैंक्स एआई, इट हैज सॉल्व्ड. ऑल राइट. आप इसको यूज करके इसको अच्छे से रख लो और आपको बराबर यूज करते रहो. आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिलने वाला है. All right. Now, next one is, so this is our first part, email. All right. Second is your messaging part of this. In messaging, अगर आप बिजनेस ऑनर हो, ओके, अगर आप एसएमएस भेजते हो या व्हाट्सएप भेजते हो, वो बहुत ही कंक्रीट एंड शॉर्ट होना चाहिए. यू कैन यूज दिस क्लियर मैसेज, ओके, to create your SMS, short messages or WhatsApp message for business people. But if you are professional, you can use the LinkedIn to create the right professional message to your customers, to your to your team, or say to your entire professional networks and all. तो आपको क्या क्या करना है कि अगर आपको ईमेल लिखना है या आपको मैसेज लिखना है या ब्लॉग्स लिखने हैं, तो ये सारे जो प्रॉम्प्ट है ना, दिस इज ऑल you can use to create your professional articles, blogs, and you can put this thing on LinkedIn. All right. So, okay, just like say, for example, maintain a professional tone. I need to send a message to my colleague. Okay, say, for example, see, this is there. I need to send a message to a colleague about a mistake they made. Okay, can you help me to write? अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप सुपरवाइजर हो, आप किसी आप कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोग्राम मैनेजर या डायरेक्टर हो, राइट? तो यू आर एट लीडरशिप पोजीशन. अब आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अपने टीम को देना है, राइट? यू कैन नॉट जस्ट गो ब्लंटली एंड टॉक रबिश टू देम. You need to be very professional and pass the right message. तो आप क्या कर सकते हो? Simply go ahead and use this one. That will make you highly professional. At the same time, you can pass the right message to your underlying team. तो इसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ना. दिस ऑल यू कैन पास आउट. से फॉर एग्जांपल दैट यू वांट टू क्रिएट द एसएमएस एंड ऑल, दिस इज देयर. यू वांट टू क्रिएट द ईमेल्स. अगर आपको लिंक्डइन पे मैसेज डालना है, राइट? लिंक्डइन, सी, लिंक्डइन इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर प्रोफेशनल्स. यू वांट टू क्रिएट दिस थिंग, जस्ट कॉपी दिस, ओके, पेस्ट दिस इन योर चैट जीपीटी एंड गेट द एंटायर कंटेंट, और उसको आप लिंक्डइन पे डाल दो. तो दैट वे यू कैन पुट दिस इन देयर. ऑलराइट. So this is your first one is email part. Second is your messaging for LinkedIn, for SMS, for email, और से Instagram में अगर आप business करते हो तो कर सकते हो. And the third most important aspect is the presentation. Many of you doing the presentation. Presentation का content कैसा होना चाहिए? That makes the huge difference. Earlier क्या करते थे हम लोग? गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे, we get lot of unnecessary content, जिससे अपना presentation खराब हो जाता था. Now let's use ChatGPT to create world class presentation. आप गामा ऐप यूज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बट द कंटेंट यू कैन गेट इट फ्रॉम चैट जीपीटी. व्हाट यू कैन डू नाउ, हियर यू कैन सी दिस इज द prompt. Okay, I have to give a presentation on the future of technology and all. Can you give me some ideas about and different angles to explore? अगर कोई नया टॉपिक है, like for example, someone has come and asked you, okay, can you create a presentation on metaverse? तो आपको लगेगा यार मेटावर्स क्या है, इस पे कैसे कंटेंट बनाएंगे और कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो आप थोड़ा सोचने लगोगे, राइट? तो नाउ यूज दिस प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द कंटेंट फॉर मेटावर्स. सपोज आपका बॉस आकर पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ बताओ, या से फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो हाउ एसईओ वर्क्स इन डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में बताओ, तो उसका बारे में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो. सेकंड से फॉर एग्जांपल दैट आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आया कि मुझे एक नया स्टार्टअप को ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन बना करके अपने जो लाइक से जो फंड प्रोवाइडर है और ये बैंक है जिससे मुझे लोन अप्रूव करवाना है, उसको प्रेजेंट करना है. यू कैन डू दिस थिंग. अभी देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब अभी इंटरव्यू होता है एटलीस्ट टॉप नॉच के लिए, तो मैंने देखा है, मतलब समवन हैज रिसेंटली कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट सर आई एम बीइंग इंटरव्यूड फॉर ग्लोबल हेड ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन फॉर डिजिटल मार्केटिंग. एंड उसको क्या कहा गया था, उसको बोला गया था कि 1 आवर का एक प्रेजेंटेशन बना करके ग्लोबल हेड को प्रेजेंट करने के लिए. Once she is able to present well, then only her selection would be taken to the next level. तो आप सोच लो कि किस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है. Now you can use this all presentation techniques to create that type of prompt, and then you can send up across this. I hope you are there, right? I sorry I missed your name. Okay. All right. Right? Perfect. Yes. Yes. All right.
Yes. Can I get the some ChatGPT from? Yes. So this Pooja, this all are chat. Thank you, thank you. It is Avijita. My bad. I missed. Avijita is there. This is exactly what happened to her. She has just called a week or 2 weeks back, and she was asking about the prompt part of this, how we can see can create this thing. So this is so powerful, guys. अब आपको अगर अच्छी जॉब में जाना है या आपका प्रमोशन ड्यू है या आपको कस्टमर को इम्प्रेस करना है, यू कैन यूज ऑल दोस थिंग्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन विद द राइट कंटेंट एंड देन ट्राई टू मिमिक दिस थिंग देयर. Alright, now you can say write an engaging script and all. Okay, develop the persuasive argument. So all those things you can try and create this thing. All right. तो I will take only this much क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा. और नेक्स्ट वाला है एक एक्सेल के लिए. तो जो लोग को भी एक्सेल में इंटरेस्ट है, एक्सेल पे आप वीवीए कैसे बना सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, दिस ऑल आर फॉर दिस एक्सेल पार्ट. तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ओवरवेलम यू विद सो मेनी थिंग्स. तो आप एटलीस्ट 2 पार्ट कर सकते हो. First, you can try out on email part of this, and second, your message part of this. Presentation and Excel sheet, we can focus on tomorrow also and do some more practice. So, आपका assignment रहा, these 2 you need to complete, and this all are available to your LMS. Let me show you where you can see in the LMS. Okay. So now, let me come to the LMS part of this. All right. I'm just opening my this there. All right. So here you can say info. All right, so this is my LMS. Okay. So in this LMS, you all have access to this. Come to this one daily workshop. Click on this daily workshop. All right. And here comes go to the end. The last में यहाँ पे आपको आज के डेट पे ओके ये आपको 8th नवंबर का यहाँ पे मिल जाएगा. ओके. Once you click on this, okay, and here can say it will be the summary part of this and all the details would be available. तो जैसे यहाँ पे है ना, तो like this you will be able to download all the prompt जो अभी मैंने दिखाया ना, सारे prompt आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. All right, are you all clear on this? Okay, Raja, I will try. Okay, I will show you some examples so that you can do. All are clear on this? यहाँ से आपको सारा prompt मिल जाएगा and you all practice this. Okay? How many of you are committed to the practice? Without practice, guys, it will not be helpful. And see, मेरा पूरा का पूरा intent यही है कि जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये practical form में बता रहा हूँ कि so that you can do the practice and become 10x better. How many of you committed? Just mention I see, I commit. All right? Alright, thank you so much. Thank you. आप कर लीजिए और अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, I can understand. Do it whenever you get the time. Alright. So that is your assignment and that is the work. Okay. Right. So let me just do a quick poll. So how was the session today? Did you enjoy the session? Was the learning good? Alright. How was the session, everyone? Did you enjoy the session? Learn something good? Great. Okay, very good. Wonderful, sir. Learning was good. Enjoyed. Very good, sir. Superb. Quality education. Very good. Very informative. Awesome. Very good. Superb. Superb. All right. Perfect. Thank you very much. Wonderful. ओके केडीपी का सेशन संडे को रहेगा. जो लोग भी ओके दोज हु आर ओके वंस अगेन दोज हु आर पार्ट ऑफ माय ऑथर ग्रुप जो बुक लिख रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी 86 पीपल राइट नाउ इन माय ऑथर्स ग्रुप. तो दैट वुड बी देयर ऑन संडे 7 PM. ओके. तो आप एलएमएस में उसका माइलस्टोन दिया हुआ है. यू कैन कंप्लीट द माइलस्टोन. कम टू दिस एंड वी आर गोइंग टू डू a revision of this. Okay, and I will give you a lot of other insight that how we are going to publish our book on KDP. All right. Yes. Yeah, you'll be all part of this. जो लोग भी हैं, yes, Sultan, we are going to cover AI PRM also and show you exactly how you can do this thing there. All right? Perfect. Thank you very much. अब मनीष मैं एक बार फिर से देख लूंगा. ऑलमोस्ट सब लोग का मिल गया. प्लीज चेक आउट योर ईमेल. सब लोग का ईमेल का रिस्पांस मिला हुआ है एंड मोस्टली आई हैव एडेड मेनी ऑफ यू. अगर नॉट ऑल बट मेनी ऑफ यू, क्योंकि जिनका भी मेल आया था सब लोग को ऐड हो गया है. ऑलराइट, ठीक है. मैं एक्सेप्ट करता हूँ. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट मी डू अ क्विक पोल. ओके, सो ओके
can like okay, please complete everyone. I just do the poll so that I understand that what is your learning and how much you are able to complete this thing. Okay. और जो लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, no problem. What I say that you get some time, review this thing once again, and let's complete this thing there. All right. Okay. All right. प्रफुल्ल, आपको मेल भेजना पड़ेगा जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऑथर्स ग्रुप के लिए, प्लीज सेंड मी द ईमेल. मैं अभी आपको फिर से एक ईमेल दे देता हूं, आप उस पे ईमेल भेज दो, because that is a bit dedicated one. Okay, I'm just sharing the once again mail. Okay, so those who are interested, please send the mail to this group. Okay, I think careerhub.com. Okay, yes. नहीं नहीं, यहाँ पे संकट नहीं देना है, आप इस पे ईमेल कर दो क्योंकि मेरी टीम वर्क करती है. They will share you the link. Okay, my team is working on that. They will check your email and they will add you in the group. वो आपको एक WhatsApp मैसेज डाल देंगे, एक ग्रुप का लिंक दे देंगे, so that you can join in there. Okay, because see, I do not want to dilute that because that is a highly sophisticated team जो लोग really like serious है बुक राइट करने के लिए. और इसलिए मैं सबको ऐसे नॉर्मल नहीं. तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ईमेल डाल दो, आप ऐड हो जाओगे. ऑलराइट. ओके, आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? जस्ट गिव मी एस सुपर क्लियर. मैंने आपको ईमेल दे दिया है, ईमेल पे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप उसको देख लो. ऑलराइट, थैंक यू. हैव एवरीवन कंप्लीटेड योर पोल? आई विल गिव यू 10 more seconds. 10 seconds, please complete this thing. I'm going to share the report also. All right, thank you so much. Okay, 10 seconds. All right. Okay, let me stop this. I'm giving you 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, let me stop this. Okay, and here you can see the result. Okay, I'm going to share the result. Can you see the result? Okay, here you can say 51% saying are great, enjoyed and learned fully. Thank you very much. 47% saying are good and confident doing myself. Excellent. Only 3% are saying are not able to understand fully. So 97% is very good number. So thank you all. And those 3% people who are saying that they are not able to do this thing, I can understand very well. थोड़ा सा बाउंसर हो सकता है क्योंकि ये AI है, थोड़ा नया टॉपिक है एंड ऑल. तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि प्लीज गो अहेड एंड रिव्यू. ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग आप कल फिर से देख लो, धीरे धीरे करके इसको देखो, स्टॉप कर लो एंड डू द प्रैक्टिस हैंड्स ऑन. आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, आई वांट यू ऑल 100% टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस. All right. Thank you so much then. And we will see you tomorrow. Tomorrow will be our question answer session there. All right. All right. Perfect. Thank you very much, Kishore. Brilliant. Your calculation is impressive. All right. Yes, Ganesh. आप author group के part हैं. Yes. All right. राइट. तो एज आई टोल्ड यू, टुमारो इज द क्वेश्चन आंसर सेशन. कल हम लोग कोई नए टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा. विल आंसर दोस ऑल द थिंग्स सो दैट यू कैन मूव अहेड विथ योर ग्रोथ. ऑलराइट. गणेश, मैंने आपको ईमेल भेजना है. ओके, दिस इज द ईमेल. मैंने ईमेल भेज दिया है, आपको ईमेल भेजना है इस पे support@rethinkcareerhub.com. ओके, प्लीज सेंड दिस ईमेल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ ऑथर ग्रुप. लेकिन सिर्फ पार्ट होने का मतलब नहीं है, अगर आपको रियली में टाइम है और डेडिकेटेड है बुक लिखने के लिए, देन ओनली प्लीज ज्वाइन द ग्रुप. ऑलराइट, दैट इज माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट. अगर आप ऑलरेडी पार्ट है, नो प्रॉब्लम ना. यस, एलएमएस लिंक तो ऑलरेडी दिया हुआ है किशोर, सबके पास है एलएमएस, राइट? ऑलराइट. Yeah, Ganesh, if you're already part of this, then what is the problem? I do not have LMS link. Okay, so let me give you the LMS link.
Okay, this is the LMS link, guys, everyone. Okay, please take a note of this. Okay, all right. One other thing, it is already there in group info also. Please check the group info. Group में जो है ना, उसमें group info में मिलेगा आपको. All right? Yes, everyone, it is there in the group info. Please check your group info. उसमें LMS का link, उसपे WhatsApp group और जो हम लोग का WhatsApp जो Zoom session है, वो सारे details दिया हुआ है. All right? सिर्फ वो मैं ऑथर ग्रुप में बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है बुक राइट करने में और बुक के लिए क्या क्या चीज है दैट इज देयर ऑलराइट ओके हाँ मोहम्मद जलालुद्दीन आई विल अप्रूव ऑल द टू द ऑथर्स ग्रुप ऑलराइट ओके ऑलराइट थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट कंप्लीट योर टास्क एंड सी यू टुमारो बाय 9:30 ऑलराइट थैंक यू एवरीवन गुड नाइट